Hello students, in the last lecture we learnt about the features of the developing economy. Okay, now today we will learn about the economic and non-economic activities. Before studying about Indian economy, let's know what economic and non-economic activities. See children, economic activities and non-economic activities, the definition will be asked in the examination. Okay, so you have to learn it properly. Now the first, economic activities. What is economic activities? The economic activity means earning or spending money for exchange of commodities or service. Okay, मतलब कि ऐसी सर्विस या ऐसी कमोडिटीज़ जिसके थ्रू हम या तो पैसे अर्न करते हैं या तो फिर मनी को स्पेंड करते हैं. ओके, अर्निंग और स्पेंडिंग मनी for the exchange of commodities or services is known as economic activity. Any activity that from which we can earn money or for which we spend the money, these activities are known as economic activities. For example, activities of a farmer, artisans, businessmen, teachers, etc. are included in the economic activity. Look children, farmers है वो उनकी जो activity है farming, they have to spend some money for the seeds and irrigation method and all these things, and by selling the crops they can earn money also. Okay, so this is the best example for the economic activity. Now what are the non-economic activities? So the activities that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities. ऐसे activities कि जिसका एम कोई इनकम गेन करने का या उसमें कोई रेसिप्रोकेट मतलब इनकम गेन करने का या कोई किसी भी टाइप का रेसिप्रोकेट नहीं है, उस एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक activity. Okay, for example, nurturing of a child by a mother, activities of social services done by a social worker, etc. can be identified as non-economic activities. Okay, मदर अपने चाइल्ड को बड़ा करती है. ओके, उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है. ओके, मदर अपने चिल्ड्रन को बड़ा करने के लिए कोई इनकम नहीं लेती है. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जो सोशल वर्कर्स है who do the social services, okay, who give the social services to others, their activities are included in the non-economic activities. Okay, now the structure of Indian economy. So various occupations and economic activities are classified into 3 sections. Do the underline: primary sector, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. ओके, अलग अलग टाइप की जो ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकंड इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड इज़ सर्विस सेक्टर. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड एज कॉमर्शियल स्ट्रक्चर. ऑल द 3 सेक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन दैम मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज. नाउ फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर. Agriculture and agriculture related activities such as cattle rearing, cattle breeding, fishing, poultry farm, collection of forest products, mining of raw material, etc. are included in primary sector section. See children, as you know, our primary occupation is agriculture. Okay, so if one want to make something, suppose if one want to make a sari, cotton sari, then first he wants raw material for this one, cotton. Okay, तो cotton जो है वो agriculture product है. Okay, so this raw material is included in the primary sector. मतलब पहले क्या है तो raw material को इकट्ठा करो. Okay, now next is cattle rearing, फार्मिंग के लिए ज़रूरी है. देन कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल. क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में अगर हम जाते हैं, इफ़ वी वांट टू मेक अ नीडल, अ स्मॉलेस्ट नीडल, इफ़ यू वांट टू मेक द स्मॉलेस्ट नीडल और द बिगेस्ट मशीन, we want the raw material for that.
that is metal, any type of metal. Okay, so mining of this raw metal is included in the primary sector. Okay, for example अगर हम घर के खाने की बात कर ले तो if mummy wants to make a pulao for us, then she wants first rice and different types of vegetables and spices. Okay, so collecting all these things for making the pulao is called the primary sector. Okay, now the secondary sector, small and large scale industries, factories, construction, electricity, gas and water supply are included in this section. Okay, then this section is also acknowledged as industry, which includes production from small pin to gigantic machine. Okay, so if मम्मी को अगर हम बोले तो first मम्मी collects the things which are needed for the pulao. Okay, that is primary sector. Now in secondary section मम्मी starting to make the पुलाव. ठीक है, मम्मी पुलाव को बनाना स्टार्ट करेगी. दैट इज़ कॉल्ड इन सेकेंडरी सेक्शन. ओके, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, these things can be used by using the raw materials or by using the primary sector. प्राइमरी सेक्टर को यूज़ करके हम सेकेंडरी सेक्टर पे पहुँचते हैं और सेकेंडरी सेक्टर पे हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. Okay, so this is known as the secondary section. Now third is service sector. Different types of services are included in this section. For example, trade, communication, airways, waterways, education, health, banking and insurance, tourism and entertainment are included in this sector. Means service sector में क्या होता है, different types of services given by the production manager. मतलब जो production है वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज देता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन है जो, तो सपोज ट्रेडिंग, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, वी स्टार्ट द ट्रेडिंग ऑफ दिस प्रोडक्शन. दिस इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. ओके, ये सर्विस सेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल ममा मेक्स पुलाव एंड देयर आफ्टर शी सर्व्स दिस पुलाव टू हर चिल्ड्रन. ओके, तो ये क्या है, ये जो काम आया उसका, दिस इज इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर. Okay, now the waterways, airways, education, health, banking, all the things are included in the service sector. So this will ask in 3 marks, write about the structure of Indian economy. So you have to write it down, all the 3 sectors and explain it. Okay, normally the primary sector dominates in developing countries. Primary sector contributes the most in employment generation and national income. However, as there is a rise in economic development, significance of primary sector decrease in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increasing. Now listen, जो primary sector है वो developing countries में देखा जाता है. As you know, अगर हम इंडिया को ही ले लें, then our primary occupation is agriculture. So agricultural production, raw material को prepare करना, that is included in the primary section. Means that is the feature of developing countries, not the developed countries. प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर. द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम, उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या तो फिर नेशनल इनकम में. एज देयर इज़ राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में राइज होता है तो प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजेज इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर. ओके, तो प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज होता है, दैट मीन्स रॉ मटेरियल का यूज़ कम होता है, और सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर ज़्यादा यूजफुल होने लगता है. दैट मीन्स द अर्निंग ऑफ मनी इज स्टार्टेड. ओके, सो दीज आर द सेक्टर्स. नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Now factors of production, so there are 4 factors of production: land, capital, labor and entrepreneurship. Okay, so these 4 types of factors which are useful in the production. So let's see. First, land. In normal sense, land is the upper layer of the surface of the earth. ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि land means what, the upper layer of the surface of the earth. But in the production, in the economic system, land is, the definition of land is not that, but land means the different types of natural resources. Okay,
लैंड मतलब क्या, यहाँ पे लैंड का मतलब ये नहीं है कि सरफेस ऑफ द अर्थ, बट यहाँ पे लैंड का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ओके, ऐसे रिसोर्सेज जो लैंड के ऊपर है और जो प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन मेटल्स एट्सेट्रा। ये सारे ऐसे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्रोडक्शन के लिए वेरी यूजफुल है। these natural resources are very useful for the production, and these resources can be found on the land only. So land is included as the first factor of the production. Thus land is the natural tool of production. Do the underline. It can be asked in the blank. Dash is the natural tool for production. Then the answer is land. Now the second factor of the production is capital. Capital means what? The man-made instruments helpful in the production process, such as instruments, tools, houses, etc. are included in the capital, property, assets and investments, etc. Okay, तो कैपिटल मीन्स व्हाट? तो कैपिटल मीन्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मैन मेड है। लिसन, लैंड इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड है जो नेचर ने हमको दिया है। कैपिटल है जो मेन मेड फैक्टर है जो प्रोडक्शन में यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल हाउसेस, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स। हाउसेस कैसे? तो सपोज़ घर के ऊपर, घर के आसपास कोई प्रोडक्शन हो रहा है या घर के अंदर किसी भी टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे होम मेड प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल पापड़ एंड ऑल दिस थिंग्स, पापड़, देन पिकल्स, ओके, देन इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, ओके, प्रॉपर्टी, एसेट्स, द मैन कैन यूज हिज प्रॉपर्टी और एसेट्स टू ओपन द फैक्ट्री, ओके, सो दीज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल फैक्टर। इन्वेस्टमेंट अपने यूज़ करेगा फैक्ट्रीज बिल्डअप करने के लिए, या तो प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन हम लोग कर पाएंगे। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन्स, स्मॉल मशीन्स, फ्रॉम स्मॉल मशीन्स टू बिगेस्ट मशीन, ओके। सो दीज थिंग्स आर मैन मेड, जो नेचुरल थिंग्स नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द लैंड फैक्टर, ओके। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, एंड द कैपिटल इज़ द मैन मेड फैक्टर, मतलब मैन मेड चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई है, दैट थिंग्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कैपिटल फैक्टर। नाउ द थर्ड इज़ लेबर। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। लेबर इज़ द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डू द अंडरलाइन। डैश इज़ द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन द आंसर इज़ लेबर। वर्क ऑफ फार्म लेबरर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिजन्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड लेबर। लेबर्स मतलब अगर हम लोग आपकी भाषा में कहें तो मजूर, ठीक है, जो काम करता है और काम के बदले में अर्निंग लेता है, अपना फिजिकल वर्क वो प्रोवाइड करता है, फिजिकल वर्क वो सर्विस प्रोवाइड करता है फिजिकली, दे आर इंक्लूडेड इन द लेबर, दैट्स वाई दे आर लिविंग फैक्टर, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेबरर्स ऑफ फार्म, या तो फिर किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेबर्स ले लो, दैन द वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिजन्स, ये सब ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और मनी अर्न करते हैं, ओके, और किसी ना किसी तरीके से इसका प्रोडक्शन में यूज़फुल होता है। सो दे आर कॉल्ड इन द लेबर फैक्टर्स। नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप, the person who efficiently combines the three factors of production, land, capital and labor, is called entrepreneur, okay. Do the underline. It will be asked in 1 mark that what do you mean by entrepreneurship, okay. So the answer is the person who efficiently combines the three factors of production, land, capital and labor। ऐसा पर्सन के जो तीनों जो फैक्टर्स है, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, तीनों का यूज़ कर सकता है, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर सकता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ करेगा, अपने एसेट्स का भी यूज़ करेगा, इन्वेस्टमेंट का भी यूज़ करेगा और लेबरर्स को भी रखेगा।
ऐसे तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर सकता है, उस इंसान को कहते हैं इंटरप्रेन्योर। उस इंसान को कहते हैं इंटरप्रेन्योर। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। और जो प्रोसेस है, जो इंटरप्रेन्योर है, जो इन तीन फैक्टर्स का यूज़ करता है, तो ये यूज़ करने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करने का जो प्रोसेस है, और फिर जो प्रोडक्शन कंप्लीट करने का प्रोसेस है, ठीक है, प्रॉफिट लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस। ओके, तीनों फैक्टर्स का यूज़ करना है प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस के लिए। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। Okay, so children, these are the four factors of production: land, capital, labor and entrepreneurship. Next is distribution of factors of production, that we will see in the next video. Okay, bye.